Good morning, dear students. Welcome once again in your computer class after your summer vacation. I hope you all are fine. So, last time before summer break, we were discussing chapter number 4, that is your charts in MS Excel, right? And we have covered two topics in this chapter, which is your introduction part and the components of the chart. So, just a quick recap of the previous topics, then we will move on to the new one. So here we have discussed about like what are chart, what is the another name of chart, and what are the uses of chart. So basically chart is what? It is a graphical representation. Graphical representation means what? I represent chart in the form of a graph like this, where we are having the x-axis, this one, and this is known as my y-axis. And if I want to present some data, so I can represent it with the help of some bars or columns like this. Fine. So chart mainly means the graphical representation of the numeric data. Numeric data like 20, 30, 40, 80, 1000 and so on. Okay? So when we represent the numbers in the form of the graph, in the form of some pictures, I will say it will become a chart. Then the next thing comes here, that what is the another name of chart. So the another name of chart is graph. That is the most commonly asked question. Another name of chart is graph. Next thing, what are the uses of chart? So uses, or we can say what are the advantage of chart. Use तो हम discuss कर चुके हैं that for to represent the numeric data we use chart. But why we are making chart? What is the use of it, or what is the advantage of this? So mainly the advantage is charts are very easier to understand. This is my first advantage, because as we know, if I will learn something like something is written in the form of a text, so it will be quite difficult for us to remember it for a longer period of time. But if the same thing will be represented using some pictures or using some graphs, then it will be very easy for us to remind it, right? So these are easy to understand and have a long lasting impression on the mind. These are the advantage of chart. Already I have covered these topic. If you want the detailed explanation, you can go through the previous video. I'm giving you the overview of this. The next one is components of the chart. We have done. We are having the different components like plot area, y-axis, which is also known as value axis. Y-axis को value axis क्यों कहते हैं? Because here we represent some numeric values, right? Then next we are having x-axis, also known as category axis. In this we are representing the different categories, like we are representing suppose the names of the students like Sunny, Ritesh, Ashfaq and Ritu. So these are the names of the students, means different categories of the students. So that's why x-axis is also known as category axis. Moving on to the next point here, data points. Data points means some values. Like if we talk about this green color bar, okay, so this means what? It is representing a value 80. So 80 is my data point. So basically data points represent some value. Next we talk about chart area. So chart area and plot area, already I explained the difference between this. What is the plot area, what is a chart area? Chart area includes all the components, like this complete term, this is known as the chart area. And plot area means where you are actually making the graph or where you are actually drawing the chart, that is known as plot area, like this much. Where you are doing the actual plotting is known as plot area. And chart area means it includes all the components of the chart, means your x-axis, your y-axis, your legends, your data points, everything is going to be included into your chart area. Then the last one is legend. So legend means the different data series which you are using in your chart is known as legend. Like here we are writing for English, just focus on it. See, for English, for maths and for science, we are having 3 subjects. So for English we are using a blue color. So this means this is representing English marks. For maths we are using
red color. So this column represents marks in math subject. Then for science we are using green color. So this is here the column which is representing the marks in science. So we can use the different legends according to the requirement of the user. So here all these cover up the components of the chart. So mainly 6 components of the chart are there: plot area, y-axis, x-axis, data points, chart area and legend. Fine. Next one, types of charts. Types of charts, we are having a variety of charts, and even in some previous classes also, like in your 6th and 7th standard, you already made this thing how to draw the chart. Fine. So moving on to the first part here, which is your first category, column chart. A column chart displays data changes taking place in a time period or to compare different items. Means what? Column chart is mainly used to compare the individual items. That means different items और different values को अगर आपको compare करना है तो हम या different categories को compare करना है तो किसका use करोगे? Column chart का use करोगे, right? One more we are having, just please look at on that one. We are having a bar chart also. A bar chart displays the comparison among individual items. Means the definition says the same thing. Column chart is also used for comparison among different items. Same the bar chart for the comparison among different items. Then what is the difference between column chart and bar chart? Just a very minor difference. क्या है difference? Only in drawing the chart. Means हम draw कैसे कर रहे हैं, उसका picturization कैसे कर रहे हैं, only that is different. Otherwise both are used for same purpose. Like आपने देखा है बार का मतलब क्या होता है? बार जैसे यू नो विम बार में क्या होता है? बार जो होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना? तो बार जो टर्म होती है एक्चुअली में वो हॉरिजॉन्टल पर्पस के लिए यूज़ होती है. तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो लाइंस हैं उसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक दिस, इन दिस वे. विम बार में आपने देखा कि जो बार होती है वो इस तरीके से होती है. कभी भी बार ऐसे नहीं होती है वर्टिकल. बार कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है. दिस इज एक्चुअली योर हॉरिजॉन्टल ड्राइंग, right? And this is your vertical drawing here. Am I right? So bar actually represents the horizontal way of drawing and कॉलम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल सेंस को. मतलब जो डेटा सीरीज़ होती है हमारी, उस डेटा सीरीज़ को वर्टिकल बनाते हैं, और अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो वो बन जाएगा बार चार्ट. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो हमने डेटा सीरीज़ ड्रॉ करी है, कैसे ड्रॉ करी है? ऐसे ड्रॉ करी है, लाइक दिस. कैन यू सी इट हेयर? यस. ठीक है. बट लुक एट हेयर इन द कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट में क्या है? वी आर ड्रॉइंग द डेटा सीरीज लाइक दिस वर्टिकली. कैन यू सी दिस डिफरेंस? So this is the difference between your column chart and bar chart. Fine. Then one more difference is also there. See, we are having here x-axis, right? And this side we are having what? Y-axis. So on y-axis we actually represents the values in case of column chart. But on x-axis we represent what? Categories. Like here we are representing categories, right? But just the opposite of it there will be in bar chart. bar chart में क्या होगा? y axis पे हम क्या represent करेंगे? category. and x axis पे what we will represent? values. This is the second difference. You can see it here. Check out. See, bar chart में y axis पे this is your y axis, this is your x axis, but on y axis we are representing categories, मतलब names of the students, and x axis पे हम क्या represent कर रहे हैं? We are representing values. So just only the picturization change is there, otherwise both are used for same purpose, right? Then next one here is your line chart. Line chart displays changing trends in data at equal intervals. It represents data in form of different lines varying at equal intervals. Means what? Equal intervals पे आपका क्या होता है? Comparison show किया जाता है.
मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो इक्वल इंटरवल्स पे शो होंगे. लाइक on y-axis we represent the values. So here as you can see we are writing 0. This is your 0. Then there is a difference of 10. So we are writing here 10. Then next is difference, क्योंकि इक्वल इंटरवल है. इक्वल इंटरवल का मतलब है कि इक्वल टाइम पर, मतलब कि इक्वल चेंजेस होंगे. लाइक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30. इट विल नॉट बी लाइक दैट कि 0 से 10 and then 10 to 15, then sometime you are taking 15 to 30, sometime you are taking 30 to 40. No. लाइन में क्या होता है, लाइन चार्ट में वी विल मेक द चार्ट एट इक्वल इंटरवल्स. इफ़ वी आर टेकिंग अ गैप ऑफ 10 वैल्यू, सो वी विल मेक इट अकॉर्डिंग टू इट. इफ़ देयर विल बी अ गैप ऑफ 20, सो 20 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, राइट. सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ डिफरेंस ऑफ 10 वैल्यू. सो 0 से 10 तक गया, देन अगेन नेक्स्ट 10 क्या होगा, 20, नेक्स्ट 10 30, नेक्स्ट 10 40, 50, 60, 70, 80, and suppose they have taken up to 90. You can take it further also, it's your wish, right. Next, here we are taking some names of the students. ठीक है, you can take the names of any 4 students. And here यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो लाइन शो कर रहे हैं with the different colors. And दिस वन फर्स्ट लाइन को नेम दिया है सीरीज़ 1, सेकेंड को दिया है सीरीज़ 2 और थर्ड को दिया है सीरीज़ 3. इफ़ यू विल लुक इट इन टू योर बुक इट विल बी मोर क्लियर टू यू बिकॉज हेयर यू कैन नॉट शो द कलर इन माई फोन. ठीक है, बट इफ़ यू विल चेक आउट इन योर बुक दीज डेटा लाइन्स ये जो लिखी हुई है ना, दीज आर शोन विद द डिफरेंट कलर्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द कलर यू विल सिलेक्ट दैट विच इज़ सीरीज़ 1, विच इज़ सीरीज़ 2 एंड विच इज़ सीरीज़ 3. तो आप कोई सा भी किसी भी सीरीज़ में बना सकते हो. जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि हम ब्लू कलर जो है वो किस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेड कलर किसी अदर सब्जेक्ट के लिए, एंड ग्रीन कलर जो है दैट इज़ फॉर द थर्ड सब्जेक्ट, राइट. बट इन द सेम वे ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट द सीरीज़ कलर ऑल्सो. सो नाउ हेयर for series 1 firstly we are taking some value here, then we are taking here, then this and then this. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो सीरीज़ 1 है पहले उसकी वैल्यू कितनी है 50, फिर उसके बाद गई नियर अबाउट यू कैन से 73 अप्रॉक्सीमेट, देन यू विल गो अप टू 80 एंड देन फाइनली यू विल लीव ऑन दिस पार्ट मीन्स ऑन 60. दिस इज 60. ठीक है, इफ़ आई विल गो फॉर सीरीज़ नंबर 2, so series number 2, suppose this one is series number 2 which is 80 initially, then it will go downwards to 60, then it will go to 50 and then 80, and finally you will join all these points together, it will become your series 2. Same you will draw for series number 3. Fine, so this is how you are going to make your line chart. Now next is your pie chart. A pie chart displays data in a comparative manner. This includes size of things that make up the data series to sum up the items. Means what? Pie chart में remember one thing, pie जो होता है that is जो pie chart होता है that is represented in which form? In circle form. Means in circular form we will make the pie chart. ठीक है, और मेनली इसमें हम क्या करते हैं, वी विल शो अ पर्टिकुलर पोर्शन दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ कैटेगरी. एक कैटेगरी ने कितना पोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा है वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं. और किस फॉर्म में बनाते हैं, ऑलवेज सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, राइट. नाउ लुक एट हेयर, सो वी आर मेकिंग इट हेयर अ सर्किल वेयर दिस ब्लू कलर रिप्रेजेंट सनी, this red color Ritesh, this green color by Ashfaq and this dark blue color by Ritu. I can give you one more example for this, like make a circle here. ठीक है, if I say 20% of the students read Hindi, so what I will say, suppose this is my 20%, 20% read Hindi, यहाँ पे है 20%. I will write it here for Hindi, and Hindi के लिए I can use a color, कोई भी color ले सकते हो and shade it. ठीक है, 20% of Hindi. फिर हमने कहा suppose 50% of the students are
interested in English subject. So I will draw it here. 50% is this approximate, 20 से तो ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, तो जो एरिया होगा वो भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो दिस इज़ योर 50% इंग्लिश. ठीक है. उसके बाद आई से सपोज इन कंप्यूटर 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, सो आई विल से 60% जो होगा वो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. सो लाइक दिस, सपोज दिस इज़ योर 60% लाइक्स कंप्यूटर, and suppose 25% of the students like math. Fine. So I can use a different color to show this, like for Hindi में 20% of the students are interested, so I will show it with this blue color. So ये क्या हो गया हमारा हिंदी के लिए, I am using this blue color. Fine. Then for the next thing, for this one English के लिए we are using suppose green color, this, and make it here this green legend. Correct है. Then for the next one, for computer 60%, for this I am using this orange type of color like this, shaded, and make it here computer data series. Fine. The last one I'm going to take suppose this sky blue color for maths and shade with this sky blue color. I hope it is very much clear to you that for the different parts we are using the different colors. So now I can say very easily, क्योंकि इसके लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए ये कलर जो है वो हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ग्रीन कलर रिप्रेजेंट इंग्लिश पार्ट, this orange color represent computer part, and this sky blue color represents math part. So this is, it show a particular portion that is occupied by a particular category, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर के लिए and maths के लिए. Fine. Here pie chart is completed. Now the next one is your area chart. So area chart displays the change in values over period of time or categories. Like area chart में हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर look at this diagram, we are making a graph like this. On lower part we are writing categories, means on x axis we are writing the names of the students, and on y axis vertical जो है हमारा y axis है उस पर हम क्या लिख रहे हैं, we are writing the values. ठीक है. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. डन. यानी कि 10, 10 का चेंजेस करके हमने लिखा है, मतलब 10, 10 का गैप करके we are putting the values in the graph. Then next thing you can see, for English we are using this blue color, for maths red color, for science green color. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप देखो, सो ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है लाइक दिस ग्रीन कलर, हाँ, सी सनी के यहाँ पर अगर आप देखो साइंस में हाउ मच मार्क्स आर देयर, 80 मार्क्स. रितेश के इफ यू विल कंपेयर, सो यहाँ पर ये है 80 मार्क्स. If you will check out for Ritesh marks in science, so it is approximate your, you can check it 60. If you will check for Ashfaq, so just little bit less, I can say as 50. And for Ritu, just check it out, for Ritu it is 80. See, means यहाँ से हमने क्या देखा, पहले क्या करेंगे हम, we will mark the points here like this. Correct, and then we will make the color, यानी कि we will fill it by green color like this. So इसमें क्या हुआ, सनी got 80 marks, रितेश 60, अशफाक 50 and रितु 80. और जितने भी डेटा पॉइंट्स आए हैं उनको पर्टिकुलर पहले मार्क करोगे और फिर उसको पूरा क्या कर देते हैं, फुल्ली कलर कर देते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि यू विल जस्ट जॉइन द पॉइंट्स, ज्वाइन नहीं करोगे, जितना भी एरिया आ रहा है उसके डाउन साइड में उस सबको क्या कर दोगे, कलर कर दोगे. तो साइंस के लिए वी आर यूजिंग ग्रीन कलर, सो हमने क्या किया, पूरा ये क्या कर दिया, फिल कर दिया विद द ग्रीन कलर. So this is the area which is occupied by the different students in science category, यानी कि in science subject. Same you will go for English. Now for English what you will do, see English में
सनी के जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, कुछ कम होंगे, तभी क्या हुआ कि ग्रीन ने उसको ओवरलैप कर लिया, क्योंकि ग्रीन के मार्क्स मतलब ग्रीन में यानी कि साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में उसके 80 मार्क्स हैं, सनी गॉट 80 मार्क्स इन साइंस, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इंग्लिश में सनी के जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, लिटिल बिट लेस होंगे, लेस होंगे, तभी तो क्या हुआ कि ये इसके नीचे ओवरलैप हो गया, तभी तो आपको ब्लू कलर नहीं दिख रहा है सनी के लिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ आई विल चेक फॉर रितेश, तो रितेश गॉट 75, अशफाक got 80 in English and Ritu got 80 in English. So when you will not 80, sorry, it is for that science, somehow less sir, यहाँ कहीं होगा, suppose this, ये वाला point, ठीक है 60। सो क्या होगा जब आप ज्वाइन करोगे ना एक्चुअली इन पॉइंट्स को, तो आपका क्या होगा, कहीं पर यहाँ पे इसके 50 मार्क्स हैं सनी के। So when you will join this particular line, this see 1, 2 and 3, so what will happen, it will get overlapped. So जब overlap होगा तो जो एरिया ज़्यादा होगा वो क्या कर लेगा, जो लेसर एरिया होगा उसको overlap कर देगा, that's why you are not able to see this blue color. If you will remove the marks of science from chart, so you can see the marks of English very well, ठीक है। इंग्लिश के मार्क्स आप तब देख सकते हो अगर आप साइंस के मार्क्स को रिमूव कर दो, अदरवाइज इट विल ओवरलैप इट। सो फाइनली यू विल कलर इट, whatever portion will be left you just color it with the blue color, rest of the area will get overlapped, fine। In the same way you will calculate for maths. So here we are done with area chart. In the next video I will show you how to draw the scatter chart and then subtype charts, right। So we are ending the video here, that's all। And about the holiday homework, yes, I hope you all have done the holiday homework, even I have uploaded the video also for holiday homework. So those who have done, they just send the PDF to me on TMAP personally you will send to me, because marks are already allotted for it, I told you। So properly send it, make the PDF properly, do not send me the images, simply send the PDF along with your name on the page, right। And up to this Saturday, that means this upcoming Saturday is the last day to submit your holiday homework. After that I'm not going to accept it anyhow, because your school are not going to open maybe up to this month, so I have to give the marks। So Saturday तक जिसकी आ जाएगा holiday homework I will give them marks, otherwise no marks for that, means that will be included in your practical, I already mentioned in holiday homework। So those who will not submit it, do not complain to me later on that I didn't get the time or whatever it is, or I didn't get any information, because in the YouTube video I am also telling it, even in holiday homework I mentioned it, and on TMAP also, so 3 times I have reminded। So make it sure, submit it by this Saturday, that's all, thank you।